afternoon to one and all. So we are here back for the afternoon session, and the afternoon we have with us Dr. S. Chatterji. He is an expert in this area of energy management, and past 35 years he has done a lot of work in this field of energy management. He had conducted energy audit, and in the field of energy conservation also they have implemented number of projects. So he was an ex-professor here, professor and head of the electrical engineering department, and in 2014 December he got retired, and then after that he was working as the pro VC in Desh Bhagat University, and now he is handling some of the projects for at NITTER itself for the Nigerians, and he is an eminent professor in the field of energy management. So I first welcome him to this course, and he will be giving you an insight on energy management techniques and all the energy conservation techniques. And tomorrow also he is having a lecture. There he'll be handling a session on hydro and wind. In depth he'll be telling about the hydro projects and the wind projects. And now I just hand over the session to Dr. S. Chatterji, and he'll be continuing it. Okay. So can I go there? Yeah. आप इसको थोड़ा सा. Okay. Is it okay? Connection ठीक ही है ना? देख लो connection. ठीक है. Good morning, participants and the ones at the report centers. I, on my behalf and on behalf of this institute, later, welcome you all for this session, which is to be taken by me. And as Dr. Shimi has said, that I'm going to talk to you, discuss about energy conservation and energy management policies. So this session will be oriented towards electrical energy. Whenever I talk of energy, I mean electrical energy, because there is one special reason for that. Electrical energy is the cleanest form of energy, and it is the most available energy, most utilized energy. That's why the management of electrical energy is very, very important. So the name of the session is conservation and management of energy. As I said, whenever I talk of energy, I mean basically electrical energy. Although there are many forms of energy, like mechanical form of energy, thermal energy, heat energy, then your light energy, sound energy, magnetic energy, biogas energy, etc., etc. Many kinds of energy, potential energy, kinetic energy, etc. But out of all these, the most utilized form of energy is the electrical energy, and that is why it has the most significance. It is the most utilized form of energy. One thing should be clear to you, that this energy management and conservation is very, very important and significant, because energy is such a commodity which cannot be produced. Neither it can be produced nor it can be destroyed. So it is only the form of conversion. One form of energy is being converted into another. So for heat energy is being converted into electrical, or magnetic energy is converted into electrical energy, or electrical energy is converted into, say light energy, etc., etc. That's why it is just the conversion of one form into another, and the form which is it converted into finally is the most significant part, because it has got the utility, more utility. Now you can also not say that if I convert, say, thermal energy into electrical. This is the task. Suppose I would say that I will like to have all the input given as thermal energy converted into electrical energy. But will it be possible to do so? No. It is not possible. Why? Why is it not possible? Why is it not possible?
we tap the energy. Is it tapping or? We convert energy, so there would be some losses associated with it. Okay, losses. The methodology, the device, what you use, what you employ to convert one form of energy into another, that itself will have certain losses in itself. Okay, so that is the conversion loss they call it. Now the loss also, as I said, energy cannot be destroyed, so it is also a form of energy. So the thing is, if you convert thermal energy into electrical energy, there could be that some part of it is converted into light energy, or some part of it is converted into magnetic energy. It is an energy, form of energy, but our objective was to get electrical energy, and 100% electrical energy was not obtained. Similarly, if you suppose, I give you an example to you. Suppose there is a filament lamp, bulb. इसमें जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी फीड करते हैं तो जब आप देते हैं तो आपको पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? टू गेट लाइट. Is it that 100% of electrical energy is being converted into light? Again, it is not. Lot of it is also converted into heat. The bulb gets hot. So it is proof that lot of energy which is used as input in the form of electrical is being converted into light energy. So one form of energy is definitely being converted into another form. That may not be 100% conversion because of these reasons. Now, when I say that electrical energy is so significant, it is the most utilized energy. It can be conveyed from one place to another place very easily. It travels at a very high speed. All these advantages are there. And then most of the devices, most of the gadgets, most of the instruments, most of the machines, they are electrical energy fed. So they work on electrical energy. That's why electrical energy is the most important form of energy. And whenever I say that I want to manage or conserve, I will like to say that I want to manage or conserve electrical energy. Is this point clear? Now, what is the meaning of conservation? Can you tell me? You say conserve, conservation, and management. There are two separate words. What does it mean? What do you mean by conservation, and what do you mean by management? Increase the efficiency of the system and their network. But conserving energy, I mean to say, we should generate only that much of energy whichever is our demand. Only that generation. Yeah. If you can generate that, so that is conservation. Conserving means we will shut down some hydro plants extra. No. In that form, No, it is not. Yes, can you explain? Conservation means transformation from one to another energy. No, that is not transformation. Conservation means saving of energy. It is a kind of saving. It is a kind of saving. It's not exactly saving. It's a kind of saving that this much energy is being totally generated, and I have got objective 1, 2, 3. I have got to get this work done. I have got to get the second work done. I have got to get the third work done. I must say that I must conserve my energy in such a fashion that all the three are done in the most efficient manner. That is known as energy conservation. Similarly, water conservation is also there. You conserve. Why you want to conserve? Tell me why. Why you want to conserve? It's limited. Energy is limited. No, energy is not limited. The resources. Resources are limited. Okay. So what is there? That energy, as I said, energy is converted in from one. It cannot be produced. You directly cannot produce electrical energy. Directly you cannot produce light energy. Directly you cannot produce magnetic energy. It is to be converted from one form. And that form from which it is being converted is the source. So mostly the sources are, let us see what are the sources. It is the fossil fuel. Why fossil fuel? Because if you go for the generation of electrical energy, there are how many types of generations? Mostly 5. thermal, Hydro, hydro, gas, diesel, nuclear, gas, diesel, nuclear,
and there can be others as well. there can be non-renewable or renewable sources also. Renewable sources, right? This is thermal is not mostly coal fed. Exactly. This is of course water. This is gas. This is nuclear, and there are so many other things which are the non-conventional way of generating energy. You have sun, you have wind, solar, wind, you have magneto-hydro, you have biogas, you have other gases, but gases, etc., etc. So they are the other or non-conventional type of fuels. The fuel is very, very important, from which either you burn it or you dig it somewhere or you get it fermented by some method and then you convert it into electrical energy. So that process is needed, and basically these are all, if they are non-renewable type, because this fossil fuel is a non-renewable type, is it not? What is a coal? What is wood? What is that? What is coal? It comes from the earth. There are plants buried under. Many years, several crores of years they were buried and they form the coal, right? But there is a limited amount of it and it is getting depleted year by year. Now it is such that about 200 years from now, you may have a situation wherein there will be no coal. Because I remember when I was young, I was small, you are all young people. When I was small, I used to get that people they're selling coal on ठेलास. वो बेचते थे वो. अभी कोई बेचता है, and that was the main domestic fuel. घरों में चूल्हा उससे जलता था. अभी कोई जलता नहीं जलता. The gas is also natural. This thing. This is also fossil fuel. This is also coming from nature. Petroleum product. This is a petroleum product. They are also petrol, diesel. They are also depleting. Coal is also depleting. अभी आप coal इतना कम हो गया है कि many times you will not find the coal is available. वो चीज तो गया. पहले तो घरों में कोल, हर कमरे में, हर मकान में एक छोटा सा कोने में कोल होता था जिसमें उसको तोड़ के भट्टी जलाई देती थी. And your this thing, food used to get ready. So that was the fuel. Now I don't think there is any house which is using coal for burning and prepare the food. So it has exceeded, depleted, and nowadays many people will be, I mean, for next generation, perhaps they will not know what is the color of the coal. They will not see what is coal. So that is the position. So it is a very dangerous position. And what is happening that our maximum generation is thermal generation. You know what is the total installed capacity of India, power-wise? 284. Because 280,000 around. Yeah, 284 gigawatts. So it is about 284,000 megawatts. This is the total installed capacity of power in India. And out of which about 65% is thermal. Still, as on today, 65% is thermal generation. Very, very important. तो अगर आपका कोल ही खत्म हो जाता है, ये bulk of the generation will go. And as I said, another 200 years later, the statistics, the graphics, and जो खुदाई करते हैं, उससे ये पता चलता है कि another 200 years you can live with coal, but later that it will not be there. So it is a very alarming situation. The rest, about 35% is hydro, gas, nuclear, etc., etc. Out of which the bulk is hydro. Hydro may be or form होता है, that is known as small hydro. Small hydro has got micro, pico, mini, etc., etc. So nomenclatures are there, and it depends on how much quantity of electricity is being generated. Is it clear? So it shows that if this is the scenario, you have to conserve energy, you have to retain your resources which are limited in nature, because electricity is a commodity. Electricity is nothing special, it is a very, very important thing, and you live with electricity. पहले जमाने में क्या होता था, नो फैन, ओके, सो जाते.
No electricity, even then we can read land trend this. Now can you believe? No one can believe. 1 minute अगर power नहीं होगा, everybody will come out. वो सब गर्मी हो रही है, this हो रहा है, that हो रहा है, AC नहीं है, telephone नहीं है, system नहीं है. So your every step is dependent on electricity, and electricity is driving you actually. You are electrically driven. जो machines होते हैं वो electrically driven होते हैं, वहाँ the human beings are also electrically driven. So your life, every step is electrically driven. So you can't just afford to waste electricity. You just can't afford to waste, or I mean non-conserve the electricity, and that is the significance. So that is the importance of electricity. So natural resources are limited. You have to conserve them. This is established. Now, one more thing I would like to say, that the irony is such that the total generation का 2/3 that is consumed by only 1/3 developed people, and the 1/3, or that is 2/3, or even 1/3, it is 1/4. ये जो है ये 1/4 of the population. Total generation का 2/3 part is consumed by 1/4 of the population. Now what is left? 1/3 is left, which is to be distributed among 3/4 of the total mega population. Why? This is the scenario of the whole world. That is why this is so important. It is a very, very mega issue in front of your planning. Okay, the planners have to take this as the mega issue. There are two mega issues. One is the electricity generation and its distribution. Another thing is the rural development. If you have any project in these two areas, you will readily get money pumped in from the central government or any state government also. You can work on it. ये projects पर आप अगर काम करोगे तो आपको बहुत पैसा मिल सकता है. So the scenario is very, very, very ugly, I would say. It is an irony that 3/4 of the total population which lives in the villages, they are only getting a meager share of 1/4 of the total generated electricity, and 2/3 of the generation goes to 1/4 of the very, very little population. This is the scenario. They live in the urban areas. Their routine is such, their lifestyle is such. So it has become a marked difference between the two. So if you take this as a very big amount, 284,000 gigawatt, it's a very, very big amount, and you have northern grid, you have southern grid, you have eastern grid, northeastern grid, central grid, etc., etc. But will we call that our country is a developed country? There are many countries who will never generate so much of electricity, but they are developed countries. How do you say, what is the index on which one can say that this is a developed or progressive country? This is an developing country, and this is an undeveloped country. What is the main index? Per person consumption of energy. What is that known as? It is per capita consumption. Of electricity. This is very, very important. The total generation is definitely important, no doubt. It's a very important factor. But the per capita consumption is very important. कि एक आदमी को कितना consume करने को मिल रहा है. Can you tell me what is the per capita consumption? Is it bigger than Pakistan? Is it bigger than Sri Lanka? Is it bigger than Bangladesh? I'm asking you. They are very, very small countries. They don't have any bridge. India is comparatively a very big country, very powerful country. But the saddest part of it is the per capita consumption of electricity of India is lesser than that of Pakistan, is lesser than that of Sri Lanka. क्या कारण है उसका?
We have huge generation, but the population is very, very huge, extra huge. Population is extra huge. It cannot match. 900 something, if it is slightly less than 1000 units. Approximately 1000 units से थोड़ा कमी है, 900 something है, is the per capita consumption. And that is why we say that India is still developing country. It is not a developed country. But आपने बहुत बारी पढ़ा होगा कि हमारी growth rate बहुत ज़्यादा है. We have overtaken China. We are, our main competition is with China. But China has beaten us in every respect. तो उसका main reason है वो हमारा per capita consumption नहीं बढ़ पाया. The irony is this, although we have generated so much. ठीक है. So अगर ये बढ़ाना है, क्या करेंगे? What will you do? As an engineer, I'm asking you, or as a planner, I'm asking you, or as a mathematician, or as a human being, what will you do? क्या करेंगे आप? पॉपुलेशन कम करनी चाहिए, वो आपके हाथ में नहीं है. That is what will you do? What is your idea, or what is your opinion? So we have to reduce the gap of demand and generation. Okay. And for Gap that, of demand का generation क्या होता है? You said you raised a very important point. Well, there is a gap. One is demand and one is supply, and they are never equal. अगर आप किसी तरीके से D और S को equal कर दें, then this problem will go. कम हो जाएगा, ठीक है ना? Demand is all very, very high as compared to, right? So this is demand. Demand is going very, very high, and this is supply, which is at this level. This is the yeah. Now the scenario is that this gap is getting greater and greater every day. क्यों? बता सकते हैं? अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा. वेरी सिंपल थिंग. डिमांड का हाई जाना हेल्दी साइन है या क्या है? Healthy science. It's a healthy sign. So you will not stop it. जाने दो. As much demand as possible. Why it is healthy? Because demand high means you are using electricity more and more. Okay, your irrigation is improving. Your industrialization is improving. Your lifestyle is improving. You are electrically driven, as I said. All machines are being automated. Everything. So that is a very good, very, very healthy sign that demand is increasing. But supply is not matching it. और दिन पर दिन वो gap जो है, this gap is increasing. If the gap is okay up to some mark, if you can maintain it, then also it is okay. But it is not maintained. It is increasing day by day. Now, what is the solution? What can you do? Renewable energy is the solution, because the main reason is the deficit of the source for the energy. Okay. Yes. See, sir, the problem with India. उन्होंने तो बोला कि population को कम कर दो. Sir, actually the problem is, sir, there are various reasons for that. First of all, financial resources. We don't have that which are power. And the second problem is this: there is a gestation period of generation. It takes 10 years, and there are disputes between states, all those things. And they actually what we plan that we are going to build it at 5 years. But what the actual scenario is that we are completing 10 years because of disputes, because of financial problems, and this. These are all issues. There are other issues as well, but these are the main issues. That generation, what we expect, what we plan, it is not. We are not working according. I agree with you. There should be political will. What do you want to say? One is the disputes between states, other state, central, everything. He will say, Haryana says, I need water from Punjab. Punjab says, no, this is my water, I will not give it. He says, I am your younger brother, you must give it. That's all those things. These are political problems. These are known as political will. If there is a political will, not many such problems can be solved, which is not there. Number two, as you said, economical problem. Economical problem is the biggest problem. You'll be surprised to know that generating one megawatt unit of electricity may cost you about 4 crores of rupees.
4 crores, let it be thermal, let it be hydro, let it be any technology, approximately 3.5 to 4 crores will cost for 1 megawatt generation, right? That's a huge amount of money. Where will the amount of money come from? So that is one thing, okay? Economically, it's not viable. But suppose no government can fund you so much, no private body can fund you so much. You have to do it within the limited funds what you have. Third thing is, if you keep on doing this burning of food for fossil fuels, coals, paper, wood, like that, husk, all those things, you are doing two things. One is the material is being depleted day by day. So your iska bank khatam ho raha hai aapka. Second thing, what harm you are doing is, as you burn things, you are polluting the environment. So environment pollution is another problem in front of you. So you cannot just say any amount I can generate. इसको अगर कम करना था, डिमांड को बढ़ने दीजिए, सप्लाई को भी बढ़ा दीजिए. Equation becomes balanced and there is no problem. There is no problem. But can you match demand with supply? Supply has to be following demand. It cannot be better than demand. It cannot be, because of as many as reasons as I said or he said. There are other reasons also. Political will hona chahiye, money honi chahiye, technology also is not known to us, efficiency of the methods are not also foolproof. So all those things will put you in a very bad shape, and you'll never be able to generate so much that the demand is fair. So there has to be a gap. The gap will remain. Now tell me what to do so that a situation of power crisis, energy crisis does not spread. Do you understand what is power crisis or energy crisis situation? Can you follow that? Energy crisis this is a very, very odd situation. It may arise, you never know. Energy crisis is that situation when this gap has increased so much that it is totally out of control and the situation become unstable. You cannot do anything. तो failure हो जाएगा. उसको बोलते हैं energy crisis. हुआ था, एक बार हुआ था, तो उसको टैकल किया गया. बट एनर्जी क्राइसिस इज हेल ऑफ अ थिंग, यू नो. एनर्जी क्राइसिस कभी हो, अगर हो जाए पूरी तरीके से, तो पूरी गवर्नमेंट टॉपल्ड हो जाएगी. Because as I said, the main index of your country being progressive, or it is under progress, or it is in progressive state, that will be decided by your per capita consumption of electrical energy. ये GDP का एक main index है. GDP आप समझते हैं ना? तो GDP, yes, GDP gives you the idea कि how much money you have for the total growth, how much product you have. And that is directly related with the per capita consumption. So if the per capita consumption is only about 1000 units, it's a very, very sad situation. So you cannot do. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसका हल क्या है? Because no technology can do it in one day. No miracle can take place. तो आप क्या करेंगे? These situations are so alarming that one day this energy crisis may appear. It may appear before you. So as a citizen, as a responsible citizen, as an engineer, as a participant, as a teacher, or as a student, what is your duty? What will you like to do? Come on, tell me. क्या करेंगे आप? First of all, efficient use. Increasing the source of energy. Increasing the source of energy. बिल्कुल सर, increasing source of energy. भैया सोर्स ऑफ एनर्जी तो मेरे पास, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स ऑफ एनर्जी तो लिमिटेड है. सोर्स ऑफ एनर्जी लिमिटेड है. डिमांड को हमें रोकना नहीं है. सप्लाई हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं. अब मेरे पास क्या बचा? Efficient use We of have to energy. conserve, यानी कि we have to efficient. You have to conserve, means efficiency of the process is to be increased. You have to do it in such a fashion that आपका bare minimum भी चलता रहे, और ये जो आपके पास स्टोर है, that store धीरे धीरे खत्म हो, abruptly ना खत्म हो जाए. इतना हमने कोयले को खा लिया that we cannot see the coal normally now. As I said कि शुरू में हम उसको देखते थे, ठेले में बेचता था,
और अभी क्या हो गया, इट इज नॉट सीन एंड छोटा बच्चा परहैप्स डजंट नो व्हाट इज द कलर ऑफ द कोल, किसको कोयला कहते हुए जानता ही नहीं। इसके नेक्स्ट जनरेशन जो होगा उसको बिल्कुल ही नहीं पता होगा कि व्हाट इज कोल, हाउ डज इट लुक लाइक, what is its significance, how important is this. So that is one scenario, and that's a very very alarming situation. It may arise and that may cause energy crisis which we want to avoid. मैं हमेशा एक चीज ये कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, that God forbids water crisis ना हो जाए. You see, there is mega water situation throughout the world. 3/4 of the universe is water, of the world is water. Only 1/4 is land. लेकिन क्या वो सारा वाटर यूजफुल वाटर है? इट इज नॉट. यू कैनॉट यूज, यू कैनॉट से, एंड देयर मे बी, गॉड फॉरबिड, इफ एट ऑल देयर इज अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, इट विल बी ड्यू टू वाटर क्राइसिस. मेरे को ये समझ में आता है. सो एवरीबडी शुड वर्क फॉर वाटर कंजर्वेशन, एवरीबडी शुड वर्क फॉर एनर्जी कंजर्वेशन. दे आर साथ साथ चलने वाली चीज. अगर कल की एनर्जी क्राइसिस हो जाता है, एनी गवर्नमेंट कैन बी टॉपल्ड. नो जीडीपी, नथिंग, नो बिजनेस, कुछ नहीं होगा. इनपुट बंद, प्रोसेस आपका बंद, आउटपुट नहीं आएगा. तो इसके लिए आपको यू हैव टू गो फॉर कंजर्वेशन ओनली. देयर इज नो अदर सॉल्यूशन. तो आप कैसे करेंगे? नाउ व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी है और उसको ऑफ करके बैठे रहिए, हमें तो खर्च ही नहीं करना. सर ने बताया था मत करो, खर्च नहीं करो, बिल नहीं आएगा, आप आराम से रहेंगे. दैट इज नॉट एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन इतना आपने कम लाइट जला के पढ़ना शुरू कर दिया कि आप चश्मा और मोटा हो गया. इतना पसीना हो गया कि क्या लिखा उसके अंदर पानी पूरा भर गया. दैट इज नॉट एनर्जी कंजर्वेशन. What is energy conservation? Energy conservation is the optimized utility, optimized use of energy for a particular purpose. You can write it down. Energy conservation can be defined. Likho, energy conservation can be defined as the optimum utilization of energy for a specific task. It is the optimum application or optimum utilization of energy for a particular task. अगर आपको टास्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है तो आप इतनी एनर्जी यूज कीजिए जो कि प्रॉपरली यूज हो जाए, लेकिन बेयर मिनिमम कंफर्ट मस्ट बी. मुझे उतनी पंखा जरूर चला लेनी चाहिए जिससे मेरी सेहत ठीक रहे. उतना लाइट आई मस्ट यूटिलाइज ताकि मेरे आंख में पावर न बढ़ जाए. सो बेयर मिनिमम कंफर्ट कैन नॉट बी गिवन अप एट एनी टाइम. उसमें कुछ नहीं आपको करना है, लेकिन उसको इस तरीके से यूज कीजिए कि अफराद ना करिए, एक्स्ट्रा ना कीजिए, एक्स्ट्रा यूज, एक्स्ट्रा वेगेंजास जिसको कहते हैं. सो दैट इज इन अदर वे सेविंग ऑफ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो आप कहां से सेव कर लेंगे? कैन यू सेव इलेक्ट्रिसिटी? तो अब जैसे है, अगर आपने जलाया तो यूज हुआ, नहीं जलाया तो यूज नहीं हुआ. वेयर डज इट गो? कभी ये सोचा आपने? इट इज, यू सी, 100% एनर्जाइज्ड. द पॉइंट्स आर 100% ऑल द टाइम एनर्जाइज्ड. अगर ये एनर्जाइज नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं. बट इफ इट इज एनर्जाइज्ड एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, इज इट सेविंग? इट इज नॉट सेविंग. देन what is it? What are the case we can save some energy? इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो पावर की बात कर रहा हूं. Actually, sir, what I was saying that we will shut down some. If we are running for. It is not shut down. You will always find that there is a shortage of energy. अब ये जो डिमांड सप्लाई की बात हो रही है तो शॉर्टेज ही तो हुआ ना. एनर्जी गैप इज शॉर्टेज. At some place it is extra. At some place it is shortage. So you must divert that electricity from the extra source to the one which needs it. That is energy management. ये जो आपका कंजर्वेशन आप कर रहे हैं, you are conserving the energy source by doing a particular scheduling, by having a particular technology. It cannot be done like that. Without technology it is not possible. You have to apply appropriate technology. The appropriate technology is to be used.
When you appropriately use the technology so that that electricity is diverted from for some other work, that other work which was short of energy otherwise, you have diverted that and done that. That is known as energy saving. That is known as energy conservation. And that is on total, if you can do it for industries, do it for domestic purposes, do it for commercial uses. Where are the energies being, electrical energy being utilized? Maximum, अगर आप अपना घर ले, तो सेक्टर्स में तो इंडस्ट्री में होता है, इरिगेशन में होता है, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में होता है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में होता है, स्ट्रीट लाइट्स होता है कि नहीं? So these are the places wherein you are doing lot of energy. आपका बहुत एनर्जी इसके अंदर आप यूज कर रहे हैं. तो कौन कौन से सेक्टर्स हुए? इंडस्ट्री, इरिगेशन, कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक, स्ट्रीट लाइट्स and public health. These are the sectors wherein you are using lot of energy. अगर आप देखें उसका परसेंटेज वगैरह भी दिया होता है कि इतना परसेंट इसमें यूज हो रहा है. डेटा, I don't have the data right now, but I should have given you. मैं कभी आपको दे दूंगा डेटा. पूरे इंडिया में डेटा है कि इस सेक्टर में इतना यूज हो रहा है, इस सेक्टर में इतना हो रहा है. कहने का मतलब यह है कि इन्हीं को अगर आप रीशेड्यूल कर दें कि यहाँ शायद एक्स्ट्रा है, इसको मैं वहां ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा, उसको यहां कर दूं, इसको थोड़ा कम कर दूं, उसको थोड़ा ज्यादा कर दूं, विद द सेम रिसोर्सेज आपने चेंज नहीं किया. यू हैव मैनेज द मटेरियल और द सिस्टम इन सच अ फैशन बाय कंजर्विंग एनर्जी दैट एवरीबडी इज बेटर. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज देयर आर 10 industries. In a place there are 10 industries. Now industries need power, definitely need power. All the industries are being keeping off on Sundays. Is this system good? अर्लियर में क्या होता था? सारे जगह संडे को बंद होता था. अब भी ऑफिसेस भी बंद होते हैं, इंडस्ट्री भी बंद होता है, बैंक भी बंद होता है. संडे को बंद मीन्स संडे को देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट दीज प्लेसेस. कमर्शियली देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. इंस्टेड अगर आप ऐसा करें कि किसी को संडे में ऑफ करें, किसी को सैटरडे करें, किसी को बुध, मंगल, सोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, it is a reschedule. You will find that with the same resources, with the same amount of generation of electricity, you will be able to do it better, more economic, more utilization method of it. So this is one energy management policy. अब domestic ले लेते हैं, right? Domestic पे you have seen that there are माताएं होती हैं, housewives होती हैं, they are very good in energy management. And some people are very bad also. I'll give you an example. आप कुकिंग गैस का यूज कर रहे हैं, you are using the cooking gas stove. तो कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो उसको फुल में चलाते हैं, उसी में तवा रख दिया, आप उसको बेल रहे हैं, उसको डाला, फिर उसको फिर सेका, उसके बाद उसको हटाया, उसको फुल्का हुआ. एक और लेडी होती है who does it, पहले तवा रख दिया, बेला, उस समय बिल्कुल सिम कर दिया, and then after some time when it gets little hot, उसको रोटी को उसमें सेका, उसके बाद नितारा, और जब उसको फुलके को उसके ऊपर रखा, then we put it to the flame. वो फक्स कब से फूला रख दिया, फिर कम कर दिया उसको. Which is better? It has to be better. Now this is energy management. You are managing the fuel, the LPG gas in such a fashion that neither your utensil is getting black, वो भी काला नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा है, आपकी रोटी कार्बन लेस बन रही है, उसमें स्पॉट्स नहीं आ रहे हैं, वो हेल्दी बन रही है. यू आर डूइंग इट फास्टर. आप क्विक कर रहे हैं, काम क्विक कर रहे हैं, क्योंकि आपको पड़ा है कि अभी करना है, क्विक होता है. अब वो नहीं करेगा तो धीरे धीरे करेगा, स्लो. सो यू आर गेटिंग अ बेटर प्रोडक्ट, you are utilizing lesser energy, and also you are getting a good output within lesser time. Another example, उस लेडी का गैस सिलेंडर जिसने नहीं किया था, अगर 15 डेज चलता है, सेकेंड लेडीज इट विल बी डेफिनेटली 1 मंथ. सो सेव किया कि नहीं एनर्जी आपने? पेट्रोल गाड़ी को भी स्टॉप करना. पेट्रोल many times in the green light you are going, the red light you are stopping. और काफी तो 1.5 मिनट 2 मिनट, चंडीगढ़ में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट का भी होता है. एंड यू आर बनाए, क्या हो रहा है उससे? यू आर वेस्टिंग फ्यूल, यू आर पोल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर,
Is it not? And you are creating a sound also. वो भी एक आप उसके अंदर साउंड क्रिएट करके आप उसको वो कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली पोल्यूट कर रहे हैं. इंस्टेड अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए बंद करिए, पूरा नहीं, अगर थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे तो बैटरी भी हेल्दी होगी, क्योंकि बार बार बंद करना कम वो करना भी आपको बैटरी के लिए खराब होगा. दैट इज नॉट हेल्दी फॉर द बैटरी. स्विचिंग कम स्विच कीजिए, लेकिन सेव पेट्रोल सेव कीजिए. आप फ्रिज ले लीजिए. फ्रिज को बहुत सारे लोग 100 टाइम्स दे विल ओपन क्लोज. एक चीज रखने का क्लोज कर दिया, दूसरी चीज फिर निकालने का. कैन यू नॉट प्लान इट लिटिल बेटर दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच आर टू बी केप्ट एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच आर टू बी टेकन. इन 2 attempts you have done 20 works, whereas 20 times आप उसको ओपन और क्लोज कर रहे थे. तो अगर थोड़ी सी प्लानिंग कर ले आप, तो यू आर सेविंग लॉट ऑफ एनर्जी in fridge also. Another example I would like to give you, long back we had done an energy management conference at this very institute. I was head of the department that time. तो उसमें हमने एक बॉम्बे से एक लड़का आया था, some man, he came from Mumbai and he read a paper on how to utilize your this system. आपको उस समय तो ये नहीं होता था, उस समय वो दूसरा वाला स्क्रीन होता था, it was not LED. तो उस समय उसने ये बताया था कि megawatts of energy is being wasted by just utilizing your system in an inefficient manner. Now can you tell me कि कैसे आपको अपना सिस्टम जो है, जो आप आते हैं, एक आता है ना बॉस, आके क्या करता है, he takes a little bit of water, then he telephones, then he puts on the this thing, your computer, और बैठ जाता है. उसके बाद फिर थोड़ी कहीं चला जाता है, वो ऑन है, पंखा भी चल रहा है, एसी भी ऑन है. क्या करना चाहिए? हाउ टू यूटिलाइज योर सिस्टम. हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म कॉल्ड स्लीपिंग मोड? बिल्कुल स्लीपिंग मोड. इफ यू गो इन स्लीपिंग मोड, इफ यू यूज द कलर ऑफ द स्क्रीन लाइटर, यू विल कंज्यूम लेसर एनर्जी. बिल्कुल सर, मोबाइल के केस में होता है. सो व्हाई डोंट यू डू इट? एंड थ्रू आउट द कंट्री कितने सिस्टम्स लगे हुए हैं, करोड़ों. So much of megawatts of energy unnecessarily is being wasted for nothing, for no means. So he read a very good paper. उसने पूरा statistics दिया था और उसने ये prove कर दिया कि so many megawatts per day can be saved just by using the system properly, efficiently. So you use your automobile optimally, use your system optimally, use your fans optimally, use your tube rods optimally. आप कलर करते हैं, घरों का सीलिंग कलर करते हैं, उसको बहुत गाढ़ा कलर क्यों नहीं कर देते? और अच्छा लगेगा देखने. डार्क ग्रीन कर दीजिए या ब्लैक या रेड, क्यों नहीं करते? हल्का कलर क्यों करते हैं? व्हाई? कैन यू टेल मी? इट इज द रिफ्लेक्शन. अच्छा, तो रिफ्लेक्शन ही अगर कर रहा है, व्हाई डोंट यू यूज द डे लाइट? आप यहाँ हेवी पर्दा लगा देते हैं. You see what bad this thing. These are the bad managements, domestic managements I'm talking about. Civil and industry में भी जाऊंगा. So you have created what? That you have very thick पर्दा आपने लगा दिया, curtains, and then you paint your this thing, and then you have your furniture, and you put on all the lights. Otherwise you cannot work. It's a very bad practice. Instead, you can use thin पर्दा, या आपको जो दूसरे वाले होते हैं वो यूज कर लीजिए. क्यों फर्नीचर का कलर ये होता है? फर्नीचर का कलर लाल ग्रीन ऐसा क्यों नहीं कर सकते? दे आर ऑल्सो फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. सो लाइट रिफ्लेक्शन शुड बी प्रॉपर, द डे लाइट शुड बी प्रॉपरली यूज, द वेंटिलेशन शुड बी प्रॉपरली यूज, द ओरिएंटेशन ऑफ द हाउस शुड बी प्रॉपरली डन, जिसको कि वास्तुकला के हिसाब से बोलते हैं. बट इट इज एक्चुअली द ओरिएंटेशन, कि किस ओरिएंटेशन में आपका घर होना चाहिए कि मैक्सिमम नेचुरल लाइट का यूज हो, नेचुरल एनर्जी का यूज हो. नेचुरल एनर्जी में 2 ही आते हैं. व्हाट इज दिस एनर्जी यूज फॉर? ईदर इट इज फॉर इल्यूमिनेशन और इट इज यूज फॉर वेंटिलेशन. मेन तो यही है ना. और उसके बाद आप इंडस्ट्री वगैरह में लगा. तो घरों में तो इंडस्ट्री होती है, घरों में क्या मेन यूज है? वेंटिलेशन एंड इल्यूमिनेशन. तो इल्यूमिनेशन, इफ यू कैन यूज द डे लाइट मैक्सिमम, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कंजर्विंग एनर्जी. Similarly, ventilation, if you can use by orienting your house in such a manner, it is the best way.
कैन यू टेल मी दैट ये पंखा है, पंखे को बहुत स्पीड से चला दिया या थोड़ा कम स्पीड से चलाया, ऑप्टिमम स्पीड से चलाया, क्या फर्क पड़ेगा? कम क्या होगा? बिल्कुल ही धीरे धीरे चला दिया तो क्या होगा? एनर्जी कम कंज्यूम होगी। कंफर्ट भी नहीं रहेगा, कंफर्ट नहीं, कंफर्ट के हिसाब से चलाएंगे, कंफर्ट के हिसाब से चलाएंगे और एनर्जी कंजम्पशन में भी फर्क है। सो व्हाई डोंट यू थिंक, व्हाई डोंट यू, थोड़ा सा अगर आप इसको क्यों ना सोचे कि मुझे जो कंफर्ट है वो चाहिए, ना कि मुझे दिखाना है कि मैं बहुत तेज पंखा चला के सोता हूं। ये नहीं करना। एसी में व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, कुछ लोग कहते हैं बहुत और ठंडा कर दे, और ठंडा कर दे, और उसके बाद कहते हैं एक कंबल और दे दे। व्हाट इज द फन? व्हाई सो? इंस्टेड व्हाई कांट यू डू इट व्हिच इज नॉर्मल टू योर बॉडी? ये तो सिकुड़ गए, 2 कंबल से भी आपको बाहर नीचे गए तो छींके मारने लगे और टेम्परेचर हो गया, ऑल दोस थिंग्स हैपन टू यू बिकॉज द टेम्परेचर वाज नॉट अप, इट इज लेसर एंड यू कंज्यूम मोर एनर्जी इन डूइंग सो. So these are very very small things but very important things one can do. इसके बाद आप घर का पावर फैक्टर अगर आप इंप्रूव करना चाहें, आप आपका कंडक्शन जो है वो इंप्रूव करना चाहें, आप देखिए कि इंसुलेटेड वायर है कि नहीं, आप देखिए कि केबल लेंथ कितनी लगाई गई है. केबल लेंथ मोर होगा तो क्या होगा? उससे ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, IR ड्रॉप भी ज्यादा होगा. इस कोने में जो वोल्टेज है उस कोने में जाके वोल्टेज कम हो जाएगी, लॉसेस भी ज्यादा होगा. So that's a bad design. These are the things, these are tidbits. What you can, आप करके देखिएगा कि आपके घर में एनर्जी बिल बहुत रिड्यूस हो जाएगा, but your comfort will not be reduced. Your comfort will remain same. Another thing is you must clean your gadgets. जो इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका जो ल्यूमेन है उसमें बहुत सारी गंदगी, डस्ट आके फॉर्म हो गया, एक्सटर्नल डस्ट हैज फॉर्म्ड और सम इम्प्योरिटी हैज फॉर्म, उसकी क्लीनिंग करने से उसकी लेयर बढ़ जाएगी. Then you can replace many of the tubes by the efficient tubes like fluorescent tubes. Now LEDs have come. So these are the tidbits which you can improve your energy conservation. You can do at your house. Now let's talk about your industry. Industry में बहुत सारे मतलब ऐसे वर्कशॉप्स हैं या आपके सेल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर एनर्जी ऑडिट किया जाता है. एनर्जी ऑडिट किस लिए होता है? व्हाई एनर्जी ऑडिट एंड व्हाट इज एनर्जी ऑडिट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बताइए. Charge at different rates. Charge at different rates is energy audit. What is audit? Audit क्या होता है? So they check whether we are using the energy which we have subscribed for. Okay. ऑडिट में इसी चेक करना कि जो स्टैंडर्ड है उससे ना कम हो रहा कि नहीं हो रहा. Okay. वो भी देखा जाता है, इसका पावर फैक्टर वगैरह. ठीक, वेरी गुड, आपने ठीक आंसर दिया, बट नॉट अप टू द मार्क. यू सी एनर्जी मैनेजमेंट, टोटल अम्ब्रेला जो है वो एनर्जी मैनेजमेंट है. टोटल अम्ब्रेला दैट आई हैव टू मैनेज माई एनर्जी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर बिकॉज आई कैनॉट supply any amount. As I said, there is a limited amount which I can generate, so I cannot supply, but demand is increasing, which is a healthy sign. I must not stop it. So what do I do? The solution is energy conservation. ठीक है? तो energy conservation का मतलब मैंने बताया था that it is the process by which you can optimally utilize your energy which is given to you to meet your demand in the best fashion. That is energy conservation. और जो इस चीज को कर लेगा वो बेस्ट एनर्जी कंजर्वर है. ठीक है? तो इसको करने के लिए there is a tool. How do you know that you are using your energy properly or not? There is a tool and that is energy audit. Is it clear? देखिए, ऑडिट वर्ड जो होता है वो पैसे के साथ जुड़ता है. आपने सुना होगा देयर इज एन AG ऑफिस ऑडिट. वो क्या करता है? व्हाट डज इट डू? उसका मेन जॉब क्या है? ऑडिट. ऑडिट करना, यानी कि सपोज कर लीजिए सम ग्रांट इज बीन गिवन टू अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट
or government organization or any organization, so money has come, fund has come to them for a particular purpose. वो उसको यूटिलाइज ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं. आपको दिया गया कि आप यहाँ लैब बनाइए. सपोज डेवलपमेंट ऑफ ए लैब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक लैब बनाने के लिए 10 लाख रुपए दिए गए. आपने लैब तो नहीं बनाया, 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, हमने खर्च तो कर दिया, but you have you done it correctly? No. So it is an audit objection. The task given to you was meant for developing a laboratory. Instead, you couldn't do it. Instead, you utilized that money, but in buying a car or buying something else, which was not to do anything with the lab. So that's a misuse. I would say it is a misuse. यहाँ पर audit objection होता है. तो ऑडिट करने का मतलब ये है, इट इज ए टूल विच चेक्स वेदर द फंड गिवन फॉर हैज बीन यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली फॉर द पर्पस और नॉट. तो एनर्जी पैसे के लिए तो बड़ा आसान हो गया. पैसे के लिए क्या है? फंड गिवन, द टास्क डन, द प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, बैलेंस शीट बन गया. ये करते हैं ना. अगर बैलेंस शीट बनाया, उसमें अगर आपने लॉस दिखा दिया, देन यू विल बी आस्क्ड फॉर व्हाई दिस लॉस. You have to answer that this was the reason, that is why the loss. Okay, I couldn't do it lesser in this lesser. But where is this audit, energy audit? इससे क्या करेंगे आप? The objective is same. Mind it, the objective is absolutely same. Means you will again find out whether the electrical energy sanctioned to you has been utilized properly or not. उसकी भी आपको बैलेंस शीट बनानी होगी. वो तरीका है एनर्जी ऑडिट करने का. तो कैसे करेंगे? आपको ईच एंड एवरी यूनिट का डिटेलिंग करना पड़ेगा कि ये यूनिट ये इस मशीन में खर्च हुआ, ये मशीन मिले इतना यूनिट, ये एपरेटस मिलके यहाँ पर लेइंग में इतना, केबल लेइंग में इतना, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में इतना, इल्यूमिनेशन में इतना, वेंटिलेशन में इतना, सारा देख के आप देखेंगे वेदर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली और नॉट. दैट मेथड, दैट मेथोडोलॉजी व्हाट यू डू टू नो इट इज नोन एज एनर्जी. कितने प्रकार के एनर्जी ऑडिट होते हैं? एक तो गो थ्रू ऑडिट होता है. गो थ्रू मीन्स यू जस्ट गो थ्रू. सपोज आई वांट टू ऑडिट ए प्लांट, थर्मल जनरेशन प्लांट के हमें ऑडिट करनी है, थर्मल जनरेशन प्लांट की ऑडिट करनी है. सो आई विल गो थ्रू एंड विल फाइंड आउट कि ओके यहाँ पर शायद गड़बड़ हो सकता है, यहाँ गड़बड़, यहाँ गो थ्रू कर दिया. इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. डिपेंडिंग ऑन द प्लांट, इफ द प्लांट इज वेरी बिग इट मे टेक 2-3 days, और if it is small 1 day, half day, etc. हो गया. हमने अपनी एक रिपोर्ट बना दी कि इन जगहों पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन ठीक नहीं होगा शायद. देन कम्स द मिनी ऑडिट. फर्स्ट इज go through audit, then the mini audit, and finally the major audit or the final audit. ये तीन है, नोट कर लो. go through audit और the primary audit, उसको primary audit भी बोलते हैं. go through audit और primary audit, mini audit or secondary audit, and final audit, third, or major audit. Now go through audit मैंने आपको बताया. Second is your secondary or mini audit. उधर क्या करेंगे? that you have to go take the designs, take the drawings, take the specifications of the instruments. Suppose कर लिए 10 लेथ लगे हुए हैं, 5 आपके हैमर लगे हुए हैं, प्रिंटिंग लगा हुआ है, कटिंग सॉ लगा हुआ है, हैमर और भी कुछ मशीन्स लगे हुए हैं आपके. उन सबों की आप स्पेसिफिकेशंस देखिए. फाइंड आउट द स्पेसिफिकेशंस एंड फाइंड आउट कि इन स्पेसिफिकेशंस से ये जॉब आपका हो रहा है कि नहीं. अगर हो रहा है तो मंथली कितना हो रहा है, एक महीने में कितना हो रहा है, और एक महीने में आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं. ईच एंड एवरी मशीन को आप मंथली कन्वर्ट कीजिए और टोटल कंजम्पशन आप निकालिए कितनी यूनिट्स की कंजम्पशन हो रही है. एंड दिस इज द पर्पस. वेदर दीज स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मशीन्स आर करेक्ट और नॉट, यू विल बी एबल टू नो. हो सकता है कि ओवर साइज मशीन लगा दिया हो. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द मशीन्स आर ओवर साइज. इट वाज नॉट मेंट फॉर. आई हैव डन इट, मैंने खुद किया है. एंड आई टेल यू दैट ओवर साइज मशीन लगा दिया तो उसमें क्या होगा? ओवर साइज मशीन लगाया तो नेचुरली कंजम्पशन विल बी मोर. अगर मोटर है तो मोटर के, आर यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स? इलेक्ट्रिकल. यू मैकेनिकल.
अगर मान लीजिए मोटर है तो उसमें क्या होगा, सपोज कर लीजिए दिस हैज हैपेंड इन ऑडिट विथ मी, सपोज आई नीड ए 2.5 HP motor, instead I put a 10 HP motor, what will happen? Wastage of extra. will consume more electricity. एक तो कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी फिर करेगी मोटर, और क्या होगा, एफिशिएंसी भी कम आएगी। वो क्यों? वही सर मोटर है सर, पावर फैक्टर भी उसका ये होगा, पावर हो फैक्टर, जाएगा। हाँ वो क्यों होगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों होगा और उसका क्या असर होगा? इंडक्शन डिवाइस सर जैसे क्योंकि पावर फैक्टर सर अगर लो होगा तो करंट बढ़ जाएगी, करंट नहीं नहीं, अंदाज में मत बताओ, अगर जानते हो तब तो बताओ, अंदाज में नहीं बताएंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल suppose I run the motor which is a 10 HP rated motor for say x hours, instead of 2.5 HP it has run with higher capacity, so it has consumed more electricity, number one. Number two, I have used the motor under load, उसकी 10 HP रेटिंग है और हमने उसको 1.5 HP या 2.5 HP के लिए लगाया हुआ, it is unloaded. पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है at its maximum load, बेटर पावर फैक्टर इज, तो पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा। जब पावर फैक्टर रिड्यूस हुआ उससे और बिल आएगा। सेकेंड थिंग, उससे एफिशिएंसी भी कम होगी। आपने कहा एफिशिएंसी कम होगी, वो क्यों होगी? इस वजह से एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस, लॉसेस विल बी मोर, पावर फैक्टर विल बी पुअर एंड ऑन टोटल आपको एक पेनल्टी भी हो सकती है। देखिए देयर आर द थिंग्स व्हिच यू शुड नो, अदरवाइज पता ही नहीं है कि लोगों को तो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं ये भी नहीं पता। Many people don't know, पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होता। तो पावर फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज पावर फैक्टर का मतलब होता है VI cos phi, ये होता है ना cos phi, वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos phi, एंड द मैक्सिमम पावर फैक्टर आइडियल इज यूनिटी 1, सो उस समय में क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा इफ इट इज 1। तो जो आपका एक्टिव पावर है, मेन पावर, दैट इज VI, लेकिन आपने cos phi की वैल्यू 1 से ज्यादा तो होगी नहीं, कम होती जाती है। V और 1 I के बीच के एंगल है, वो रिएक्टिव पावर की वजह से होता है। तो जो ही वो ज्यादा होता जाएगा पावर फैक्टर की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 है, लेकिन cos 1 की वैल्यू 1 से कम है, cos 2 की वैल्यू और कम है, cos 3 की वैल्यू, जितनी phi इंक्रीज होती जाएगी उतनी cos phi की वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। जब रिड्यूस होती जाएगी तो ये जो पावर है ये इससे कम हो गया, इज इट नॉट? VI अगर होता तो ज्यादा होता, अगर x होता तो VI इंटू cos phi विच इज लेस देन यूनिटी विल बी लेस देन x। तो क्या मतलब हुआ कि पावर जो एक्चुअल आपने ड्रॉ किया वो उतना नहीं ड्रॉ किया जितना कि आपको ड्रॉ कर सकते थे अगर पावर फैक्टर हायर होता। आपने पावर ज्यादा ड्रॉ किया उसको मीट करने के लिए, उसी काम करने के लिए आपने पावर को क्या ड्रॉ किया, ज्यादा ड्रॉ किया, दैट इज व्हाई योर बिल विल बी मोर। एक चीज, दूसरी चीज आपकी क्या होगी, दैट यू आर ऑल्सो पोल्यूटिंग द पावर सिस्टम। हाउ? आई से यू आर पोल्यूटिंग द पावर सिस्टम बिकॉज ऑफ योर लो पावर फैक्टर, पुअर पावर फैक्टर। इसको कहते हैं पोल्यूशन ऑफ द पावर सिस्टम। कैसे कर रहे हैं? आपका लोड मान लीजिए इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड का लैगिंग पावर फैक्टर होता है और ज्यादातर लोड आपकी इंडक्टिव होते हैं, मोटर्स जितने भी लगे सारे इंडक्टिव, और भी ज्यादा आपका पुअर पावर फैक्टर हो गया। और पावर फैक्टर अगर आपने 0.95 नहीं मेंटेन किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। यू डोंट नो, पेनल्टी आपको लग के आ जाएगा, आपको सोचेंगे लास्ट डेट ये है इसको दे दो भाई, लेकिन आपने जबरदस्ती एक पेमेंट एक्स्ट्रा किया विच मेनी पीपल डू नॉट नो, पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता। So what is that? That's what I'm explaining. That you have gone for, by putting a higher standard, higher rating motor, you have asked the motor to draw poor power factor. More power you have drawn, more money you have paid, as well as आपने poor power factor को भी poor कर दिया। तो उससे आपको जो कंपनी है वो, जब आपका तो लगा ही हुआ है मोटर, आपने तो छोड़ा नहीं उसको, बरसों वही लगा रहेगा। मोटर एक बार लग गया तो लगा है, आपके पास पेनल्टी लग के आएगी, और उस पेनल्टी को अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो यू विल कीप ऑन पेइंग दैट एक्स्ट्रा मनी व्हिच वाज नॉट रिक्वायर्ड। सो लुक इट हाउ डेंजरस इट इज। सो यू हैव टू बी अ गुड प्लानर। सेकेंड थिंग, एक तो ये हो गया कि लोड को आप कैसे
सेकेंड थिंग, व्हेन यू आर एक वर्कशॉप जैसे है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पावर वायरिंग करना चाहते हैं, the length of the cable, as I said, should be absolutely of the proper length. बड़ा लेंथ करेंगे तो आपको लॉस होगा. अब there is a point called power center of gravity. नोट कर लीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मान लीजिए सपोज here there are some machines and you have to put a source of supply for them. आप इसको डिजाइन कर रहे हैं, आपने यहां मान लीजिए सप्लाई लगा दी और इससे आपने फीड कर दिया. Is it a good design? No. Why it is not? Because the length from the extreme corner will be more. Yeah. This is smaller. This is bigger. This is even bigger. This is even bigger. This is biggest. This is also biggest. तो यहाँ पर जो machine है, if the supply is here, the length of the cable what you are terminating here is much longer. Similarly here much longer. But here it is smaller. So voltage what this is getting is different. Voltage what this is getting is different. What this is getting is different. This is getting is different. So इससे voltage distribution आपका irrelevant हो गया. Unequal voltage drop. What will happen? Voltage drop will be lesser here. Voltage drop will be more here. Is it not? I square R loss will be more and lesser here. It will be more here. Instead, what should you do? You should put a center of gravity somewhere here. जिससे ये कहीं यहाँ पर ऐसा लगाइए, equidistant करीब करीब, बिल्कुल equidistant शायद नहीं होगा, but almost equidistant. There you put your this thing, and there from there you have put the distribution box, you put the circuit breaker, you put the whole distribution system. So your system will be better. Voltage point of view, it is better. Similarly, जो केबल आप लगा रहे हैं, उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, should check it properly whether that is able to bear that amount of current or not. It will depend on what? किस पर डिपेंड करेगा वो? करंट पे डिपेंड करेगा. करंट किस पर डिपेंड करेगा? लोड. So depending on this machine is supplying this load, so it has to take this load, so its current rating should be properly rated. तभी मैंने शुरू में बोला था कि सेकेंडरी में इनकी डिजाइन देखी जाती है ना, वो सारा लिखा जाता है और उसको देखा जाता है कि इसको ठीक आएगा कि नहीं. You have to put it properly. If you don't do it analytically, scientifically, you are always going to have some losses. So everything is to be kept in mind and proper design has to be taken. This whole situation, this designing, drawing, specifications, where they are correct or not, you have to make a chart, and that thing is known as secondary audit or the mini audit. So naturally, it will take much more time than the first one, that is the closed audit. Now, what is the third one? That is the major audit or the final audit. Tell me. Major or the final audit. क्या होगा? Each and every element would be tested there. You have to carry out the experiments. Every machine will be run, your operation will be checked, timing will be seen, temperature if increases will be seen, the readings will be taken in detail, and every operation will be verified whether that has served that purpose or not. So that is why it is known as major audit या detailed audit या final audit. करने के बाद ये सारे जब आपने कर लिए तो क्या करेंगे? कर तो लिया आपने. Well, what will you do? Analyze. फिर what we will check if it is as per rules or not. IE specification तो होगा ही होगा. IE specification के बिना IE rules and IE specification, these are the two
rules which you have to follow. IE rules, Indian electricity rules, and IS specification. वो तो आप फॉलो करेंगे. What will you do? लेटर ऑन क्या करेंगे? आपने बहुत कर दिया. पहले आपने उसे देखा, फिर उसको अपने स्पेसिफिकेशंस देखा, उसकी ड्राइंग देखी, उसकी सारी कुछ चेक करी, उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट्स करे और उसका परफॉर्मेंस चेक किया, and then you have got the results. Now what will you do? If he has violated the normals, then penalty. You have to prepare a report known as energy audit report. नोट डाउन करो. सर पॉइंट्स आपको मिलेंगे नहीं कहीं पर, मैं तो ऐसा आपको एक्सटेम्पोर बोले जा रहा हूं. You will not get it in many of the books and all. Energy audit report. So energy audit report is a very very thick report. पूरे डिटेल में preamble, you'll start from preamble and go up to the recommendations. That is the thing I was asking you. What will you do now? You will now recommend, आपके recommendations लिखेंगे कि ये यहाँ पर इस कमरे में मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 की जगह अगर आप 4 कर दें, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, उसको थोड़ा यहाँ, उससे भी काम चलेगा. That is my recommendation. You can reduce the load. You can reduce the tube rods to not 1 but LED 2 feet का जो rod आता है, illumination level same. These are the recommendations. You will remove so many fans are not required. हाँ, थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए कि यहाँ कर दीजिए कि यहाँ, जो कि एस्थेटिक भी होना चाहिए. It should be aesthetic also. ये नहीं कि आला तिरछा कुछ लगा दिया. That is very bad. एक होता है ना, आप जाके देखेंगे घरों में कोई एक वो जो होता है क्राफ्ट, वो बहुत बुरी तरीके से टेढ़ा करके स्विच लगाता है. That is not required. You have to do it craftsmanship better. So that is known as aesthetic sense. But optimum utilization is more important. So you will put everything in detail. और पूरी ड्राइंग देंगे, पूरा रिकमेंडेशंस देंगे, मेथड देंगे, कितना किलोवाट लॉस हुआ, ये वो आप बैलेंस शीट करेंगे. This much unit you have utilized and this much unit has been worked for. So this is the wastage. You have drained out so much of electricity for no work for which you are responsible. And then to save that, you will recommend your things. वो जो है आपकी recommendations होगी, उसमें आप बताएंगे कि इनकी जगह इतने पंखे लगा दीजिए. इसमें एसीज लगे हुए हैं. Can you tell me whether they are correct or not? Are they optimum? No, sir. क्या होना चाहिए? एसी को कैसे लगाते हैं? It should be at center, one should be at center and other should be at Okay. कैसे लगाते हैं? It should be, उन्होंने कह दिया, ये उनकी thinking है, that is his perspective. How do you put it? How do you put that so many lights are to be put? According to the requirements, such that Where is the requirement? the purpose should be made, that of the cooling. When we are thinking about ACs, Now, two things are there. One is AC, one is the cooling purpose, another thing is lighting purpose, right? Cooling or heating, that is ventilation. And other one is lighting. So let us talk about the lighting. How do you design? You design और ऐसे ही लगा देते हैं. सर फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड है, अभी ब्लैक बोर्ड पे सारी लाइट आ रही है और स्टूडेंट तक मींस की क्लियरली दिखाई दे रही है सर. ये तो आप it should go through all the. नहीं, it is all right. That is a common man's this thing. I want to know it from the engineer's point of view. Sir, we have to check the luminance required at That's this it. level. Every work, if you are playing table tennis, your lumens are different. If you are working on a lathe, your lumens are different. But if you are reading a book, your lumen may be different. If you are seeing the blackboard, that's a different. So specify the task first. What is the task for which you have to go for illumination? एक inverse square law होता है, आपने तो पढ़ा होगा illumination design, पढ़ा नहीं है? Design नहीं पढ़ा है, लेकिन सर ये पढ़ा है. आप तो mechanical हो, electrical के हैं. Sir, I am from electrical. अच्छा, you are from electrical, then you should also know. Illumination law होता है, inverse square law. That tells you how many lumens are required per square meter for a particular task. इसका चार्ट भी आता है. उसको देख के आप डिजाइन कीजिए कि अगर मुझे ये काम करना है तो हमें कितनी ल्यूमेंस की आवश्यकता है, कितना सरफेस एरिया है, कितना ल्यूमेंस चाहिए, उस हिसाब से लाइट डिजाइन होगा. अब यू गो फॉर द डिवाइस.
If the device is tube rod, it is naturally an outdated thing. पहले बल्ब होता था, उसका ट्यूब रॉड आ गया, उसके बाद क्या आया, CFL आ गया, CFL के बाद अब LED आ गया. So it is changing. Why it is changing? Because the technology is changing day by day. The research is taking place, and there is a base on which you are saying that. Baseless, you cannot say, you cannot design like that. You have to have a base. These are the base and what I'm telling you. So go for that. Then you know how many lumens you are required. How many lumens you are required, and what type of device you will select. Go for the efficient device so that power factor is good, so that your lumens are also good, so that the consumption is also good. Decide how many. Now you know X, Y, Z, what is the number. और जहां पर आपको स्पेसिफाई, यहां पर अगर आपको लाइट ज्यादा चाहिए तो इधर आपको थोड़ा ल्यूमन ज्यादा करना पड़ेगा, अगर वहां से ल्यूमन कम चाहिए वो कम में भी सकता है. दैट इज द डिजाइन यू हैव टू डू. The entire area is given to you. Similarly, cooling. This is for the per square meter, how much of air it is cutting. But what about the AC? AC की रेटिंग किसमें होती है? Tons. क्या होता है उसका भार? What is the ton? Ton means what? कभी सोचा नहीं इन सब चीजों को, है? Ton means it is the volume of the air, what it is cooling. So now what will you do? अगर आपको AC लगाना है रूम में, what will like to do? आप बताइए, मैकेनिकल इंजीनियर, ये तो मैकेनिकल का भी सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं किसी ने बताया नहीं होगा ऐसा. बताओ कैसे करोगे? आपको इस रूम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. मींस ओनली लेंथ एंड ब्रेथ से नहीं चलेगा. लेंथ एंड ब्रेथ वाज फॉर इल्यूमिनेशन. आपको हाइट भी लगानी होगी. कितना एयर इसके अंदर है, उस एयर को आपको इस टेम्परेचर में लाने के लिए कितना AC की जरूरत है, उस हिसाब से एयर कंडीशनर डिजाइन किया जाता है. ये नहीं कि एक 2.5 HP लगा दे, हम रूल है 1 HP लगा, 1 टन का लगा दे. What is this nonsense? This is absolutely bogus. I'm telling you. There are scientific ways of doing it. So do it accordingly. So आपने वेंटिलेशन डिजाइन किया, आपने इल्यूमिनेशन डिजाइन किया, उसके बाद प्रॉपर्ली प्लेस कीजिए एस्थेटिक सेंस के हिसाब से. आप देखिएगा आपकी डिजाइन प्रॉपर. This is everything is in your recommendations. Now another thing, as you said very intelligently, that power factor will be reduced. As you go for inductive load, power factor has to reduce. What will you do? क्या करेंगे आप? Capacitor bank introduce करेंगे. Okay, where will you put the capacitor bank? Sir, near the load. It is near the load all the time. Almost क्या? Maximum time is there is a source of lowering power factor. Everybody, what is your good name? Rais. Huh? Rais. You are from Jammu Kashmir. Your accent is like that. If you know it, तब बताओ. अंदाज से मत बताओ. I'll tell you. अंदाज से मत भाई, ये हो सकता है शायद, ये इससे कोई फर्क नहीं, उन्हें कुछ नहीं होता. Don't beat about the bush. क्या होता है? What happens? What was the question? क्या पूछा था? Location of the capacitor bank. Well, inductive load will have lagging power factor. Is it okay? That is known. Inductive, as you go for more and more inductive loads, everything is inductive in nature. तो आपका lagging power factor ही होगा. Now you want to improve it, so you have to make some reactive device, and that is why you named capacitor. That's a capacitive reactance. Inductive reactance की जगह उसको balance करने के लिए capacitor. But you know that if all the time as capacitor, that capacitive bank is on the line, it may arise a situation wherein it may become leading power factor. That is equally bad. Leading power factor is also not good. ठीक, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको वो जो कैपेसिटर बैंक आपने लगाया उसको ऑप्टिमम टाइम के लिए लगाना होगा. यू हैव टू डिजाइन ए टाइम वेयर फॉर विच यू हैव टू पुट इट. उसके बाद ऑफ कर दीजिए, फिर उसको ऑन कीजिए, फिर थोड़ी देर तक के लिए रखिए. फिर तो व्हाट विल यू डू? पहले तो सबसे पहले ये कैपेसिटर बैंक, हाउ विल यू चूज कि व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटर बैंक यू विल गो फॉर? हाउ डू यू डिजाइन दैट? दैट इज अ डिजाइन. You people, as energy man, I would say, whether mechanical or electrical, you are an energy auditor. मैं आपको बताऊंगा कि energy auditor क्या होता है. You are an energy auditor. You are a designer. So you have to tell from the design point of view. आपको solution देना, ये नहीं कि
ऐसा कर दीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कितना करना है वो बताइए, exact standards you have to tell. So how will you design the capacitor bank? So what is the inductive load? Okay. Accordingly, What? The reactive power is to be worked out. kVAR, kilovolt ampere reactive. That you can work out, is it not? So work out the kilovolt ampere reactive which is in the inductance form. Accordingly, same kVAR are to be produced in are to be kept in the form of capacitance. उसकी रेटिंग आप जानते हैं, उसकी भी kVAR आपको पता हो, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करें. So that is, आपको ये पता चल गया कि कितना बड़ा कैपेसिटर बैंक आप लगाएंगे. Is it clear? So first step is design the capacitor bank size in the form of kVAR, reactive power. Then the place or the location of the capacitor bank. You said very correctly that it should be near the load. Load के आसपास होना चाहिए, कोई optimum जगह पर लगा दीजिए. Now the next question is, how long will it be in the circuit? You have to calculate that kVAR. kVA is what? Kilovolt ampere. है? इसको अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? टाइम से एनर्जी में आ जाएगा ना, एनर्जी में आ जाएगा. सो टाइम से मल्टीप्लाई करके आप देखिए 4 घंटे में कितना वो kVAR कैपेसिटेंस दे रहा है. अगर वो 4 घंटे में वो मेकअप कर देता है, दैट मीन्स बियॉन्ड 4 आवर्स इट विल गो फॉर लीडिंग पावर. 4 घंटे तक तो आपने चला दिया, 4 आवर्स के बाद में क्या होगा, ये फिर से लीडिंग पावर फैक्टर की होगी. तो 4 घंटे के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा. कितनी देर तक स्विच ऑफ करेंगे? अगेन स्विच ऑन फॉर 4 आवर्स. दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द ड्यूटी साइकिल. हैव यू एवर थॉट ऑफ सच थिंग्स? कभी आपने इस चीज को ऐसे सोचा होगा कि एनर्जी मैनेजमेंट कितना टेक्निकल चीज है, कितना कुछ आप इसमें कर सकते हैं. ड्यूटी साइकिल मीन्स ऑन ऑफ, हाउ लॉन्ग इट विल बी ऑन, हाउ लॉन्ग इट विल बी ऑफ, again how long it will be on, again how long it will be off. That is known as duty cycle. So you have to go for the duty cycle. Once you have taken, you have defined and you have mathematically proved that this is the duty cycle, you have represented its place of location and you have calculated the kVAR of the capacitor bank, your problem is over. आप लगा के देख लीजिए, उसके बाद उसको स्विच ऑफ ऑन करते रहिए तो आपका पावर फैक्टर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा. The question is, how will you switch it on and off? कैसे करेंगे आप? क्या कोई जाके उसको ऑन करेगा, ऑफ करेगा? Nowadays it is not recommended. So you have to go for a control circuit. Mind it, लिखिए. You have to go for a control circuit having microcontroller or microprocessor. So design a circuit. Long back मैंने किसी ME स्टूडेंट से ये डिजाइन कराया था. And it was such a wonderful circuit, beautiful circuit he designed with a microcontroller weights, and power factor is always 0.97, 0.98. Why don't you take it as a project? So this way, these are the things you have to recommend, that you have to have a good power factor, you don't have any loose connections. Loose connection होने से क्या होता है? Constant voltage drop, power loss. आपने कई बार देखा होगा, many times you must have seen on the transformers, एक ग्लो होता रहता है, ऐसे ये पोल माउंटेड ट्रांसफॉर्मर्स हो, देखा है कि नहीं? देखा. क्या आपने कुछ किया उसके बारे में? देखा तो होगा, you must have seen it, but what action have you taken? In your premises also you must have seen. वोल्टेज भी फ्लक्चुएट करती है इसके लिए. वोल्टेज नहीं यार, मैं वो जो ग्लो उसके ग्लो से सर, ग्लो क्या हुआ तो क्या किया उसका? व्हाट इज दैट एक्चुअली? लूज कनेक्शन का काम होता है. इट इज अ लूज कनेक्शन, इट इज अ पावर लॉस, कांस्टेंट पावर लॉस. उस पे अगर आपने उसको देखा और चले गए, यू हैव डन अ क्राइम, यू आर अ क्रिमिनल. आई एम टेलिंग यू, अगर इस चीज को आपने तवज्जो नहीं दिया, पढ़े लिखे इंसान होके, यू आर अ क्रिमिनल. आपने इतने बड़ा लॉस को सह लिया. इमीडिएटली व्हाट यू शुड डू इज, यू शुड टेल द मैन कंसर्न, जो आपका स्टेट का ऑफिसर है या जो कंसर्न उसका है, वो बताइए वहां कांस्टेंट पावर लॉस हो रहा है,
इसको ठीक कीजिए. इट इज ओनली ड्यू टू अ लूज कनेक्शन. सिमिलरली आपने लाइट, स्ट्रीट लाइट्स में भी देखा होता है. सो इट इज वेरी 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 बैड थिंग, लेकिन होता रहता है. यही सब चीजें हैं. दीज आर द टेक्निकल फ्लॉज. बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड विदाउट एनी मीनिंग. बिना किसी कारण के वो वेस्ट हो रहा है. ठीक है. अब देखिए, ये तो आपने वर्कशॉप में इस तरीके से, लेइंग प्रॉपर होनी चाहिए, कनेक्शंस टाइट होनी चाहिए, लेंथ ऑफ द केबल प्रॉपर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी एज पर एज आई सेड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप शुड बी प्रॉपर्ली चेक, केबल शुड बी प्रॉपर्ली लेड, उसका इंसुलेशन आप चेक कीजिए. दीज आर द टिक बिट्स हाउ यू गो फॉर एनर्जी सेविंग. एंड यही उसके अंदर आपका रिकमेंडेशन हो. अब रिकमेंडेशन तो आपने दे दिया ना, लाला ने सुन लिया, वो क्यों एग्री करेगा. आप कहेंगे ना इसको करने में इतना पैसा खर्च आएगा. भाई कैपेसिटर बैंक इफ यू वांट टू पुट और यू वांट टू ले दिस ईयर लूज कनेक्शन नहीं करो तो पैसा खर्च होगा कि नहीं. एनी अमाउंट से एक्स वाई जेड समथिंग, व्हाई विल ही एग्री टू इट. वो क्यों एग्री करेगा. आप क्या करेंगे, आपका काम है उसको एग्री करा के उसको इंप्लीमेंट कराओ. एंड व्हाई विल ही एग्री, व्हाई विल ही इंप्लीमेंट, व्हाट इज योर रोल बताइए. योर रोल इज टू प्रोवाइड विद हिम पे बैक पीरियड. नोट करो, पे बैक पीरियड. means you will work out that this much is the cost for the device to be put. अच्छी मोटर लगाया, मोटर को रिप्लेस किया, टाइट कनेक्शंस किए, सर्किट ब्रेकर लगाया या कैपेसिटर बैंक लगा, बहुत इतना पैसा खर्च हुआ. लेकिन ये पैसा इतने दिनों बाद उसको कहते हैं पे बैक पीरियड. आपको लौट आएगा. क्यों? क्योंकि आपका बिल कम होता जा रहा है. And after that, suppose you give him that 5 years is the payback period. Suppose I'm just giving you an example. 5 years is the payback period. After 5 years भी वो पैसा आता रहेगा. That will be a bonus. जब आप इस तरीके से वर्कआउट करोगे प्रोजेक्ट को, इस तरीके से उनको समझाओगे, एनी मैनेजर, एनी लाला विल एग्री टू. हमने ऐसा किया हुआ है. हमने एक खंडेलिया ऑयल मिल में ऐसा किया था एनर्जी ऑडिट. और हमने ऐसा किया कि हमारा पॉलिटेक्निक टीचर्स, आप कहाँ के हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग. सो इट्स अ मिक्स ग्रुप, राइट. सो दे वर आवर पॉलिटेक्निक टीचर्स. पॉलिटेक्निक टीचर्स हैड टू डू अ प्रोजेक्ट वर्क व्हिच आई डिड. तो उसका प्रोजेक्ट वर्क तो वो इंडस्ट्री बेस्ड हुआ था. सो आई डिड इट फॉर देम. बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कहीं कोई प्रोजेक्ट नहीं देता, वो सब कहते हैं मास्टर लोग कुछ नहीं कर सकते. ऐसा ही होता है ना फीलिंग उनके पर. बट दैट इज अ रॉन्ग फीलिंग. तो आई सेड कि वो, उसका नाम था फुल, सरदार था वो जो उस ग्रुप में था. 4 लोग थे, 1 वाज फुल. वो जलंधर का रहने वाला था. उस मेरे पास आता है, सर हमको तो कोई देता ही नहीं. मैंने कहा चल मैं चलता हूँ. मैं क्या, मेरे को भी नहीं दिया. बहुत करते कराते एक बार वो खंडेलिया ऑयल मिल वाले ने हमें ये प्रोजेक्ट दिया. वो कहता है सर हमारे यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आता है. वो क्यों आता है पता नहीं, वो आप कुछ कीजिए. मैंने कहा हम कर देंगे सॉल्व. तो वी टुक इट एज अ एनर्जी ऑडिट प्रोग्राम. उसको हमने बोला कि आप 10-15 साल 20 साल जितने भी इनकी बिल्स हैं ले लीजिए, ओके, एंड स्टडी इट कि व्हाट आर द रीजंस इसके लिए. उसके बाद इसको देखेंगे क्या क्या बिल्स. हमने ये पाया कि 4-5 बार तो उनकी पेनल्टी लग चुकी है, पुअर पावर फैक्टर 1 पॉइंट. और जब ये वॉक थ्रू ऑडिट किया, मिनी ऑडिट किया मेजर, उसमें तो जम्बल्ड ऑफ वाटर वायर्स, बैक प्रोटेक्शन, लेइंग बैड, ये सब दुनिया भर की चीजें. और वो चीज मैंने पाया कि मोटर उसने 10 HP का लगा रखा था इंस्टेड ऑफ 1. हमने उसको पूछा कि व्हाई डिड यू पुट दिस मोटर, यही स्टोर में अवेलेबल था. दैट फेलो इज अ नॉन टेक्निकल पर्सन, ही डजंट नो. उसको क्या है, ये है चल यही लगा देता है. कितना बड़ा वो लॉस करा रहा है, ही डजंट नो. इस तरीके से हमने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया. तो हमने भी कैपेसिटर बैंक की वर्किंग बताया उसको. तो उस समय उसने बोला ये तो पैसा खर्च हो जाएगा. मैंने कहा कि आपको पे बैक कितने में हो जाएगा. हमने 6 महीने का टाइम दिया. 6 महीने बाद वो मुझे फोन किया, कहता है सर वो आपके स्टूडेंट्स कहाँ हैं. मैं वो तो चले गए.
नहीं हम उनको जॉब देंगे. I said they are all job शुदा लोग हैं, they are all teachers and they are working, they don't need a job. No, they have worked a very fine thing and I have saved so much of electricity. तो बड़ा खुश हो गया. फिर कहता है कि एक एक टिन कनस्तर एक एक ऑयल सबको दे दिया, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी दिया. So you can also do such things. Now the question is, who will do this energy audit? आपको तो पूछना चाहिए. Who will do the energy audit? अभी तक energy audit का बारे में समझाया, because I said it is a very important part of energy management. Tool है, एक कंजर्व करोगे तभी तो जानोगे, तभी कंजर्व करोगे, जब कंजर्व कर लिया तो मैनेज हो गया. तो who will do this? Inspector is there. It is power development department. No. Electrical inspector It is is, there. I'm telling you, it is a group work. It cannot be done alone. एक ग्रुप का काम है, तो उसको ऑडिट ग्रुप बोलते हैं. ऑडिट ग्रुप में इंजीनियर का ग्रुप होता है, आपका ये सुपरवाइजर होता है, ड्राइंग का होता है जो कंप्यूटर अच्छा जानता हो, ड्राइंग ऑन कंप्यूटर्स, दैट विल बी अ मेंबर टू इट. ऑल इंजीनियर्स कैन बी मेंबर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सारा कुछ इसका मेंबर होता है. टेक्निकल ग्रुप, सुपरवाइजरी ग्रुप, आपका ये ग्रुप क्या बोलते हैं. अनदर इज योर ऑडिट ग्रुप. एक आदमी उसको ऐसा होता है जो कि बैलेंस शीट बनाता है. इफ ही डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंस, हाउ विल you will not be able to make it. So you have to understand, an audit man also makes a group. This is the energy group. और इसका एक लीडर होता है, वो the works manager, general manager, whosoever it is, that is the leader of the group. And this is energy group, energy audit group. They will be doing it. So पहला सबसे पहले जो मिनिमम आता है उसको बोलते हैं एनर्जी अवेयर पर्सन. यू कैन नोट डाउन, एनर्जी अवेयर पर्सन. Energy aware person means he should understand what is the significance of electricity. ये होना चाहिए नहीं. मैंने बहुतों को देखा है कि लाइट जलती रहती है, बॉदर ही नहीं करती. Why it is being? मैं एक बार long back I had gone for a short term course in शिमला. तो शिमला में ठंड बहुत थी, तो people were using lot of heaters and all. हीटर जल रहा था, लाइट भी जल रहे थे. तो मैं जब वहां पर गया लंच के बाद, लंच टाइम में मैं देखता हूँ कि पूरे ऑफिस में ऑल द हीटर्स ऑन एंड नोबडी इज देयर. कोई ऑक्युपाइड नहीं है, वो ऑक्युपेशन नहीं है कि कोई ऑक्युपाइड नहीं है. मैंने प्रिंसिपल को बोला कि आई एम गिविंग एन एनर्जी मैनेजमेंट कोर्स एंड दिस इज योर सिनेरियो, इसको बंद कराइए तुरंत. So this should not be, the attitude should be positive. A person has to be positive attitude and with understanding of what is energy. Why, how significant it is the maximum a commodity. You cannot just afford to waste it. ये एक एटीट्यूड होनी चाहिए. कईयों को मैंने देखा पानी का टैप खुला हुआ है, nobody is bothered, चल रहा है. मैंने एक बार जाकर बंद कर दिया पार्क में, तो मेरे साथ कोई एक सज्जन टहल रहे थे, वो कहता तुमको क्या फर्क पड़ता है. मैंने कहा फर्क पड़ता है यार, क्यों नहीं फर्क पड़ता, यदि वो तो सरकारी पानी है. मैंने सरकार तो हम आप हैं. व्हाट इज सरकार, क्या है सरकार, व्हाट इज गवर्नमेंट? इट इज यू एंड मी. And our tax money is being paid for all these things. So one should understand. कोई बल्ब भी तोड़ता रहता है, उसको कोई मना नहीं करता. मैंने देखे हैं बहुत सारे. So ये awareness है. This is awareness. The first thing is the person should be energy aware person. Second thing is energy supervisor. उसका higher energy supervisor. Means he should be able to tell others कि एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है. डोंट वेस्ट एनर्जी, ऑप्टिमम यूज करो इसको. जैसे मैंने आपको बता रहा है, ये सब चीजें बताने को सुपरवाइजर कहलाता है. उसके बाद होता है एनर्जी ऑडिटर. एनर्जी ऑडिटर who can by different means find out what is the position of energy. As I said, he will be able to carry out the audit and understand where is the energy being wasted. That is energy auditor. उसमें से इंजीनियर्स ही होते हैं. मैं आपको बताऊंगा कौन बन सकता है. और इसके ऊपर जो होता है फाइनली, who has a vision, that man is known as energy manager. Energy manager. So it started with energy management. Now I have given you the introduction.
what is conservation, what is energy audit, and how you manage the system. Actually, the resources are to be managed. Now the question is, who can become an energy auditor? You can become, you can become, you can become, you can become, I can become. What is the way of doing it? There is an online examination. हर साल 2 बार होता है. उसका एक साइट है, आप देख सकते हैं. ब्यूरो ऑफ एनर्जी क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी में एक साइट है. Go to that and appear for the online test. इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग. वो सब लोगों के पास है, डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग. सो यू ऑल आर qualified for that. Write that examination online and earn the license of being an energy auditor. You have to earn a license. जब आपके पास लाइसेंस आ जाएगा तो आपके सिग्नेचर की वैलिडिटी होगी. You can sign as an energy auditor on an energy audit report. So people will run after you. आपको पैसा भी होगा, फेम भी होगा, नेम भी होगा, everything. And people will know, oh, such and such is a good energy auditor and he has taken such energy auditing projects. उनको पकड़ो हमारे टीम में. Naturally you will rise. इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, but you have to know the things, you have to read a lot. बताया ना कि कैसे एनर्जी अवेयरनेस है, देन एनर्जी सुपरवाइजर, देन एनर्जी ऑडिटर. बट टू क्वालिफाई एज एन एनर्जी ऑडिटर, क्वालिफाइड एनर्जी ऑडिटर, you have to get the license that you can get through it. So the thing is, charity begins at home. Charity begins at home. आप इसका जो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, एनर्जी मैनेज करने की एक छोटी सी प्रोसेस आपको बताई, ये आप अपने घर में स्टार्ट कीजिए. Because it begins at home. And see this, what I have told you. Use these tidbits. And you all are engineers. You should do it scientifically. And you will see the result. Then do it for the location. 5-7 हाउसेस के लिए कीजिए, फिर मोहल्ले के लिए कीजिए, फिर सिटी या विलेज के लिए जहां भी आप रहते हैं, टाउन, उसके लिए कीजिए, फिर स्टेट के लिए कीजिए, फिर नेशन वाइड कीजिए. And finally, you can do it on international basis because everything is online now. Grid connected. आप grid में भी participate कर सकते हैं. These days, grid are connected. National, international. One grid. हाँ. So international grid पे भी आप participate कर सकते हैं. You can buy your ideas also. Online you can say, if you have a qualification of being an energy audit, your ideas will be validated and they will be honored. उसको वैल्यू देंगे लोग. ठीक है? With these words, I would like to finish off the lecture. If any questions you have, you may ask the questions. So there was a question. Surely. Polluting the power system. So Yeah. we have not, I'll tell you what is that. Now, you are one of the consumers, right? The power line is there, and on power line there are so many consumers. You are not only the consumer. Consumer 1, consumer 2, consumer 3, and so on. Suppose you are one of the consumers, and if it is at the beginning, it is more important. The power what the supplier is giving you is neat power. Neat power means quality power. It has voltage fluctuations, no voltage fluctuations, no harmonic contents, no power factor is 0.97 or so, and everything is healthy. So it is no voltage fluctuation, no voltage sag, etc., etc. So quality power. But you as a consumer are using certain loads. For your load, you are not only putting the power factor poor, but you are also introducing harmonics to the systems. Once you do it as a consumer, the same power is being fed to the other consumer. So the power what he will get is of lesser quality. This is known as power. He may also add certain impurities. So ultimately the whole power system becomes polluted, and this I rate as power pollution. And it is a very, very dangerous situation, and you are always entitled for paying penalty. If you are polluting, power penalty आपको लगेगी. Is it okay? Any other question?
Okay.